Our age need compassion, a wish for the happiness of mankind. Cruelty, envy, greed, and competitiveness are the evils that must be avoided. Many persons may laugh at the mention of love or compassion, but it is something that proves the mainspring of intellectual honesty and the basis of a purposeful life. A man who has love or compassion will never suffer from a sense of the futility of existence. हमारे युग को मानव के सुख की कामना के लिए सहानुभूति की आवश्यकता है। क्रूरता, ईर्ष्या, लालच और प्रतिस्पर्धा ऐसी बुराइयां हैं जिनसे बचना चाहिए। प्रेम या करुणा के उल्लेख पर बहुत से लोग हंस सकते हैं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो बौद्धिक ईमानदारी और उद्देश्यपूर्ण जीवन के आधार को साबित करता है। एक व्यक्ति जिसके पास प्रेम या करुणा है वह अस्तित्व की व्यर्थता की भावना से कभी पीड़ित नहीं होगा। कंपैशन सहानुभूति, मैनकाइंड मानव जाति, ग्रीड लोभ या लालच, कॉम्पिटिटिवनेस प्रतियोगिता, ईविल बुराई, मेंशन चर्चा, मेन स्प्रिंग मुख्य प्रेरणा, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, पर्पसफुल उद्देश्यपूर्ण, फ्यूटिलिटी व्यर्थता, एग्जिस्टेंस अस्तित्व। If you find value in this video, please do like, share and subscribe so that I can create more like this. Thanks for watching. Keep watching, keep learning. All the best guys.